Welcome to Ignite India's YouTube channel. This is Anand, and we are continuing where we stopped last time. To give a brief about Ignite India, we are an institute which has been inspired by Dr. APJ Abdul Kalam. We work on the vision of India beyond 2020, and we have been working since 2006. We have mentored and trained more than 25,000 students from across the country towards their preparation for admission at the premier design institutes, architectural institutes, and fine arts institutes. For us, every person who's preparing for these institutes is very, very important, and quality matters a lot. And that's the main reason why we are a team of people who are alumnus of colleges like NIFT, NID, IITs, and IIM. My name is Anantacharya. I'm a postgraduate from XLRI Jamshedpur. And with my experience and background, I train students at Ignite India on their aptitude side of preparation, which most of the students do not consider to be one of the strongest area to function. But this is one area which can actually decide your selection and rejection category. Basically, I'm an entrepreneur, management professional, aptitude trainer, and a mentor. Till now, we spoke about how, the three sectors of a cat's life, because they say a cat has 9 lives, right? So the three sectors of cat lives are distributed. And on the similar way, we also plan about how a student has to bifurcate their journey towards this exam in 3 different ways. You got to plan, you got to prepare, and you have to participate. In the last 2 videos, which you will find in YouTube channel of Ignite India, you will find about the planning and the preparation side. Whereas today, we are going to talk about the participation part of it. Planning was very simple, how I divide my entire structure of preparation of my journey into a 40%, 30%, and a 30%. Preparation was how do I start my preparation? What are the buckets that I have to cover when I'm preparing any kind of a topic? Now comes the participation side. So in the participation side, I would like to take a bit more information. Like when you look into an aptitude exam, we know that there is a coverage in English, there is a coverage in maths, there is a coverage in general knowledge and current affairs, and there is a coverage in reasoning. Now, the point is not about me solving many questions or me solving every chapter. The key area is once I solve, once I understand, once I learn, right? Once I acquire this knowledge, how do I position myself? How do I participate in such a way that my knowledge is now applied through various means to get high score, to get used to, selecting and rejecting questions, to ensure that my accuracy is very, very high. Now, to do this, the most important thing that we have to do is participate. Now, where do we participate? Participate in what? Is it a public speaking? Absolutely no, right? Participation here means that taking lot of tests, taking lot of problems that I can practice, solve, right? Against time, against accuracy, against speed. So that's what participation means. So we break the participation into 3 portions. First portion is a basic participation. The basic participation is basically where I take tests to understand what kind of questions am I comfortable in solving, what topic I have done, and how am I now able to solve questions under that particular topic. So let's assume, taking an example, let's say that I have done a topic on percentage profit loss, which is a maths topic. Now, once I have done this topic, what should I do next, right? Should I directly jump into taking tests? Should I take certain questions, solve them? Should I start with example questions? What kind of levels of questions should I do?
So that's your basic participation. The next participation that we can call as is applying participation, right? Or I can say as application. So once I have done with the basic participation, now I start applying it. Okay. And finally, I have to now expertise whatever I have applied. So basically means that what I try to tell you here. Let's assume that I am overall taking around 30 tests in a particular topic, right? 30 tests. What I will do is I will break this 30 tests into 3 parts. Now, how do you break? What numbers should you put? That is open to you. Okay, there is no rule here. I will not say 10 tests, 10 tests, 10 tests. You can do that. Or you may do 8 and 12 and 10. You can choose the way you want. The first part is where you will apply your basics. Okay, so here, my idea is that whatever question I'm going to solve, right, I should be able to know, gauge from which topic this question has come. Second, I should be able to gauge, right, what is the difficulty level of this question. Okay, if you have to put the difficulty level under level 1, level 2, level 3 category. What are these levels? Level 1 are questions which are easy, that if you assume that this question comes in an exam, almost everyone will try to attempt it, or almost everyone will attempt it. So those are the questions which are easy. Second is a moderate, where only few of them will attempt. And the third module is a difficult one. So you got to bifurcate your questions into 3 portions, where you realize that when you read a question, which topic is it from? What is the difficulty level of this question? How much time do I may take? Remember, not others. I may take to solve this question. And finally, what is my accuracy rate? Okay. So these are the 4 things that you will, get informed, or you will finally come into informations or conclusions when you start your basics. Or these are your learning objectives. Now, once you have done this, right? So here, what doesn't matter in basics? Speed doesn't matter. Okay. It doesn't matter how fast you're going to do, right? You may take 2 minutes for a problem. You may take 5 minutes for a problem, which means speed is not the concern here. The concern is that you should be able to put your knowledge into application. This is your basic. The next set, what you're going to do is, once you have understood the basic testing platform, you will apply this testing platform in certain tests. So you will take your real-time tests, right? Now, what happens in a real-time test is all those things that you have gathered in your basics, you're going to test against time. So here, speed matters. But why is it that speed shouldn't be considered in the first category, but should be considered now? It's because your first category is to ensure that your learning objective is very clear. Your learning objective is number 1, IMA should be able to identify the topic. I should be able to identify the level of difficulty. I should be able to get my accuracy, identify what kind of questions requires how much time to solve. And I should be able to get to know what kind of questions are my strength, weakness, or basically in terms of accuracy. Now, once that is done, that portfolio is covered. Now I'm going to do a testing, right? Real-time test. So in real-time test, because the test is limited in time slot, okay, I will be able to not perform the way I performed in the basic test. अगर basic test में 10 question है and I did all the 10 questions, ठीक है, लेकिन वही 10 question मुझे अगर किसी ने बोला 8 मिनट में करना है, 10 मिनट में करना है, तो हो सकता है मैं 10 के 10 नहीं करूंगा, राइट? लेकिन ये रियल टाइम टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? अब मेरा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव कवर हुआ है पहले में, राइट, आई विल बी एबल टू अप्लाई दैट. यानी कि in 10 minutes if I give you 10 questions, you will be able to select the first lot which are easy ones, कि ये तुरंत हो जाएगा, ये करना ही करना, राइट? उसके बाद आप दूसरे क्वेश्चन में जाओगे. वरना प्रॉब्लम कहाँ पे आता है बच्चों में? यूजुअली बच्चों में प्रॉब्लम ये आता है कि वो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, क्योंकि पहला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने सॉल्व किया, फिर आया क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व किया. तो ऐसे सॉल्व करते हुए
पांचवें छठे क्वेश्चन में जाते जाते उनका टाइम खत्म हो जाता, एंड देन दे रियलाइज कि भाई लास्ट के जो 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं या 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, दोज वर मच मच इजियर देन द वंस दैट आई डिड। ठीक है, तो वो समझने के लिए हमें ये रियल टाइम टेस्ट लेना पड़ता है। रियल टाइम टेस्ट में एक तो टाइम अगेंस्ट के आपने टेस्ट लिया, दूसरा आपका मेन पॉइंट होता है स्ट्रैटेजी। नाउ व्हाट डज स्ट्रैटेजी मीन? जब मैं टेस्ट ले रहा हूं, राइट, लेट्स से मैं इंग्लिश का एक टेस्ट ले रहा हूं, माय स्ट्रैटेजी कैन बी कि आई कैन स्टार्ट फ्रॉम ग्रामर क्वेश्चंस, or I may start from vocabulary questions, or I may start from reading comprehension। या कभी कभी ऐसा होता है कि मैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से शुरू करता हूँ, एक पैराग्राफ या एक पैसेज पढ़ लिया, पैसेज के जो नीचे 4 या 3 या 4 या 5 जितने भी सवाल हैं वो कर दिए। उसके तुरंत बाद मैं दूसरे पैसेज में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा ग्रामर के क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा चेंज लाने के लिए अपने। सो आई गो टू द ग्रामर क्वेश्चन, 3-4 ग्रामर के क्वेश्चन कर लिए, फिर मैं वापस एक और पैसेज में आया। राइट, इससे क्या होता है कि मेरा माइंड को थोड़ा चेंज मिलता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सबके लिए वर्कआउट हो। कुछ लोगों का ये होता है कि एक बार मैंने आरसी शुरू कर दिया तो मेरा कंसंट्रेशन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में बहुत है, सो आई विल कंटिन्यू डूइंग रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और फिर मैं जाऊंगा ग्रामर। राइट, तो ये पता करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी करना पड़ेगा, आपको खेलना पड़ेगा। राइट, सो यू विल हैव टू प्ले विद लॉट मेनी टेस्ट। ठीक है, तो टू डू दैट यू रिक्वायर सेट नंबर ऑफ टेस्ट जहां पे आप खेलोगे, एग्जाम टेस्ट पेपर के साथ खेलोगे। राइट, कौन सा सवाल पहले बनाना है, कौन सा सवाल बाद में बनाना, कौन सा सवाल बनाना ही नहीं है, कौन सा सेक्शन पहले बनाना है। जी के पहले शुरू कर लेते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा। या मैथ्स मेरा स्ट्रेंथ है तो मैथ्स शुरू कर देता हूँ, या इंग्लिश में मुझे अच्छा लगता है तो इंग्लिश शुरू कर देता हूँ। तो ये सारे स्ट्रैटेजीज होते हैं। राइट, सो यू गॉट टू हैव योर स्ट्रैटेजीज इन प्लेस। वो प्लेस में एग्जाम के दिन आप नहीं कर सकते, या एग्जाम से 1 महीने पहले नहीं कर सकते, वो अभी से करना पड़ेगा। तभी जाके आपके जो नेचुरल प्रोसेस होता है एग्जाम लेने का वो उभर आता है बाहर। राइट, यू कम टू योर नेचुरल प्रोसेस ऑफ टेकिंग एन एग्जाम। क्योंकि अब तक क्या हुआ है कि वी हैव ऑलवेज टेकन दीज एग्जाम्स ऑफ स्कूल्स एंड बोर्ड्स, जहां पे हमने हमेशा पहले क्वेश्चन से ही सॉल्व करना शुरू किया। राइट, कहीं कोई भी एग्जाम याद है आपको जहां पे, हो सकता है एक आध एग्जाम हो, लेकिन ऐसे एग्जाम जहां पे आपने बीच से शुरू किया नहीं। अगर आपको पहला क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आपने पहले से ही शुरू किया, चाहे वो आंसर कितना भी लंबा हो। राइट, तो ये स्ट्रैटेजी नहीं चलेगा एप्टीट्यूड एग्जाम्स में। एप्टीट्यूड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन का एक लिमिटेशन होता है। राइट, आपके पेपर का लिमिटेशन, आपको ये नहीं बताया जाता है कि इतना मिनिमम करना है पासिंग मार्क्स के लिए। राइट, जितना ज्यादा करोगे आपके रैंकिंग्स ऊपर आते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। नाउ वंस यू हैव डन दिस, वंस यू हैव डन योर बेसिक्स एंड वंस यू हैव डन योर स्ट्रैटेजी, इसके बाद आता है आपके रियल टाइम टेस्ट विच इज योर एक्सपर्टाइज। राइट, तो रियल टाइम टेस्ट मतलब इसमें भी रियल टाइम टेस्ट मतलब मॉक टेस्ट बोलता हूँ या फुल लेंथ टेस्ट बोलता हूँ। राइट, फुल लेंथ टेस्ट मतलब एक पूरा प्रॉपर एग्जाम लेना। तो अब जैसे मैं सेक्शन मैथ इंग्लिश शुरू कर दिया, मेरे पिछले एक्सपीरियंस से मेरे को मालूम है कि मुझे पहले शुरू करना है ग्रामर, उसके बाद मैं जाऊंगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, उसके बाद मैं आऊंगा वोकैबुलरी। राइट, तो ये हो सकता है। तो जो भी आपने डिसाइड किया है स्ट्रैटेजी में, वो आप इंप्लीमेंट करोगे फुल लेंथ टेस्ट में। क्योंकि यहां पे रिमेंबर, इन दिस फुल लेंथ टेस्ट योर मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जैसे आपका रियल टाइम टेस्ट में मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी, फुल लेंथ टेस्ट में आपका मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज कंसिस्टेंसी। यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट इन योर स्कोर्स। ठीक है, आप 100 मार्क्स में पहले 80 ले आए, दूसरे बार 60 ले आए, फिर 70 ले आए, फिर 60 ले आए, ऐसे नहीं हो सकता। यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब अगर आप 80 लाए then the next exam can be something between a 77 to an 83। राइट, तो आपको ये देखना है कि हर टेस्ट जब आप ले रहे हो आपका स्कोर सिर्फ बढ़े, घटे नहीं। राइट, हो सकता है टेस्ट के डिफिकल्टी के लेवल के हिसाब से आपका स्कोर ऊपर नीचे जा सकता है थोड़ा, दैट्स ओके, थोड़ा जाना ठीक है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जाना गड़बड़। राइट, सो दैट्स वेयर दिस फुल लेंथ टेस्ट कम्स। ओके, ओनली आफ्टर द फुल लेंथ टेस्ट इज व्हेन यू राइट योर मेन एग्जाम। राइट, सो पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। So this is what you have to do when we take about participation, right? So if you ask me how many, कितना करना पड़ेगा,
तो ये तो ध्यान में रख लो कि आपको कम से कम 15 फुल लेंथ टेस्ट जो हम FLT बोलते हैं ये आपको लेना ही है, कम से कम 15, राइट, जिसमें आपको लास्ट के 8, रिमेंबर व्हेन यू आर टेकिंग अ फुल लेंथ टेस्ट यू हैव टू टेक विद द रेस्पेक्ट टाइम, ओके। आप ऐसा नहीं कि अभी कर लिया फिर खाने के लिए चले गए बीच में फिर वापस आए फिर कर लिए, नहीं। अगर 2 घंटे का टेस्ट है तो पूरा 2 घंटे बैठना है, वहां 2 घंटे में आपको वॉशरूम जाने का तक का इजाजत नहीं, राइट, ना खाना खाने का इजाजत, बिकॉज दैट्स हाउ द रियल टाइम एग्जाम इज गोइंग टू बी, राइट। तो you have to take this 15 length test and last 8 mock test full length test will determine your average score कि आप कहां तक आके पहुंचोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, right? So that's what it is on the participation side. Number 1, take basic test. Now what do you mean by basic test? Basic test में क्या क्या कवर होता है? पहले आएगा आपका टॉपिक वाइज टेस्ट। सो जो भी आपने टॉपिक किया उसका एक टेस्ट लेना जरूरी है, एक नहीं कम से कम 5 से 6 टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट हो गया, राइट। टॉपिक में जानकारी होने के बाद देन आई हैव टू डू अ सेक्शनल टेस्ट। व्हाट डज सेक्शनल टेस्ट एंड टॉपिक वाइज टेस्ट डिफर बाय? टॉपिक वाइज टेस्ट में मुझे मालूम है कि इसी टॉपिक से सारे सवाल है, राइट। लेकिन सेक्शनल टेस्ट में क्या होता है कि सेक्शनल टेस्ट में 3-4 टॉपिक को जंबल करके सवाल दिया जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेक सेक्शनल टेस्ट, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट समझते समझते या सॉल्व करते करते मेरे का अगला सवाल जो आएगा वो अलग कॉन्सेप्ट का होता है। सो माय माइंड शुड बी एबल टू रिकलेक्ट इंफॉर्मेशन इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, okay, so that's why sectional test is very very important. So once you have done your topic test, once you have done your sectional test, only then you will take your full length test, okay. full length test उससे पहले आप नहीं लोगे। हाँ, जहां पे आप फुल लेंथ टेस्ट ले रहे हो वहां पे फुल लेंथ टेस्ट 2 भागों में बांटा जाएगा। पहला है स्ट्रैटेजी भाग, ओके, दूसरा है कंसिस्टेंसी भाग। सो विच मीन्स one set of full length test you will take to ensure that your strategies are in place, another set of full length test you will take to ensure that there is a proper consistency in the way you take. Clear guys? In case while taking these tests, while practicing, or if you feel कि मुझे ये practice papers कहाँ से मिल सकते हैं, क्या मिल सकते हैं, then I would suggest that you can always log on to through Google Play Store to our app, Ignite India Educational App. Download them. You will find tests which you can take, right? And once you have taken a test, अगर आपको doubts हैं, कोई भी test का doubt है, कोई भी topic का doubt है, you can request, you can connect with us. You can also connect to the person named Mr. Gaurav and Mr. Krishna Singh, who are both mentors at Ignite India, and connect to them, and they probably will be also be happy to solve all kinds of doubts you have. We can also invite you to various other sessions that we conduct from the private side of it, right, which is our private Zoom classes. So we can invite you there, and you can, you know, get a much more information than what you have right now for towards your preparation, right guys? Thanks a lot for watching this video. If you have any information or if you have any doubts, you're free to connect by putting a comment in below, right? We will come out with many classes now that we have finished our entire journey of how to plan, how to prepare, and how to participate. Now we will come with the real-time topics on reasoning, on maths, on English, and on GK current affairs, right? So be there. All the best, prepare well, and if you have any doubts, as I said, you can connect to us.